फैसला है वो हिजाब मामले में सामने आ गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला आया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नेहा हिबाले इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नेहा, तो क्या फैसला आया है? जी देखिए, बिल्कुल इनफैक्ट अभी ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद हम देख सकते हैं जैसे ये हिजाब का इशू आगे आया था, आज कर्नाटक हाई कोर्ट में ये इशू आगे आया है और अभी 3 जज बेंच जो है इनफैक्ट उन्होंने अभी 3 प्रश्न फॉर्म किए थे और ये क्वेश्चंस को इनफैक्ट वो एक एक करके आंसर कर रहे हैं। पहली बात ये कि इनफैक्ट वेदर वेयरिंग ऑफ हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ, वो पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये कि इनफैक्ट जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब हुआ था क्या वो लीगली परमिसिबल है कि नहीं, और तीसरा ये इनफैक्ट कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो पास हुआ था Feb 5 का क्या वो इनफैक्ट आर्बिट्रली मैनिफेस्ट हो सकता है या वो आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है कि नहीं। अभी हम देख सकते हैं कि इनफैक्ट अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है कि जो अभी इनफैक्ट क्वेश्चन रेज हुए थे उनमें इनफैक्ट पहली बात ये कि हिजाब जो है इनफैक्ट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि इस्लामिक फेथ में जो है इनफैक्ट हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यही हाई कोर्ट ने अभी बोला है। दूसरी बात ये कि इनफैक्ट सारे पेटिशन जो थे इनफैक्ट वो अभी बिना मेरिट के है, ये भी अभी हाईकोर्ट ने बोला है। तीसरी बात ये कि इनफैक्ट जो अभी डिसिप्लिनरी एक्शन रिक्वेस्ट किया गया था गवर्नमेंट के खिलाफ लेने के लिए, इनफैक्ट उसमें भी कोई मेरिट नहीं है, यानी कि नो केस हैज बीन मेड आउट फॉर इशुएंस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द कॉलेज अथॉरिटीज। तो अभी तक इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है कि इनफैक्ट हिजाब बैन को अपहोल्ड किया है, यही इस टाइम का इनफैक्ट सबसे बड़ी खबर है। हम आपको ये भी बता दें कि इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है कि हिजाब डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द इस्लामिक फेथ। दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म जो प्रिस्क्राइब हुआ था वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ प्रिस्क्राइब हुआ था और स्टूडेंट्स को इसके खिलाफ ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात ये इनफैक्ट कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर था क्या वो वैलिड था, अभी हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि इनफैक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ या कॉलेज के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जी नेहा, तो जिस हिसाब से कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम का ये जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि ये जरूरी धार्मिक चिन्ह नहीं है और हिजाब पहनना अब अनिवार्य नहीं होगा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि अब शिक्षण संस्थानों पर इस फैसले का बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में नए फैसले देखने को मिल सकते हैं। जी देखिए, इनफैक्ट अभी हम आपको बता दें कि ये जो हाईकोर्ट ने बोला है, उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला है कि पूरे मामले को उन्होंने अच्छे से पढ़ के एंटायरली ये जो पूरा मामला था इनफैक्ट उस सब को होलिस्टिक व्यू में लेकर ये आज जजमेंट दिया गया है। ये देखना पड़ेगा अभी इनफैक्ट कि ये जो अभी वर्डिक्ट आया हुआ है ये सारे कम्युनिटीज और सबको इनफैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका क्या फॉल आउट रहेगा अभी ऑन ग्राउंड ये देखना बाकी रहेगा। हम आपको बता दें कि ये इनफैक्ट उडुपी में जो शुरू हुआ था, 6 छात्र या 8 छात्र इनफैक्ट जो थे उन्होंने इनफैक्ट हिजाब पहनने के लिए परमिशन मांगा था और जब उनको नहीं दिया वो कॉलेज के बाहर इनफैक्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां से जो शुरू हुआ था अभी मार्च के महीने में हम देख सकते हैं कि ये इनफैक्ट एंटायर मामला अभी निपट चुका है। हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है, लेकिन क्या ये अभी और आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो मामला है ये स्टूडेंट्स के एजुकेशन के बारे में है और उनका एजुकेशन अभी लाइन पे डाला गया है। यहाँ तक कि इनफैक्ट एग्जाम्स भी मिस हो चुके हैं बच्चों के और छात्र के, इसी कारण से तो ये देखना बाकी होगा अभी कि इनफैक्ट ये जो पूरा मामला है क्या ये अभी फर्दर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा कि नहीं। हम आपको बता दें कि इनफैक्ट जब हाई कोर्ट मामला सुन रहा था तब एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डाला था कि ये मामला सुना जाए, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कर्नाटक हाई कोर्ट को ये मामला सुनने के बाद उनके वर्डिक्ट के बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा। तो अभी यही देखना होगा कि ऑन ग्राउंड जो परिस्थिति है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑलरेडी देखा सेक्शन 144 इनफैक्ट इम्पोज, डिस्ट्रिक्ट लास्ट टाइम काफी सेंसिटिव हो चुके थे, काफी इनफैक्ट वायलेंस हुआ था वहां पे, और ये देखना होगा इस बार कि कैसे परिस्थिति रहेगा ऑन ग्राउंड लॉ एंड ऑर्डर का। जी बिल्कुल नेहा, तो ये बड़ी खबर जो है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का इसमें आदेश आ गया है और इसी पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं अभी हमारे सामने आ रही हैं, आपके साथ भी हम साझा कर रहे हैं, सुनिए जरा।
इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, इसलिए मेरा बोलना सही नहीं है। लेकिन हिजाब एक बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है। मेरी फैमिली में भी करीब करीब सभी इसे पहनते हैं। तो जैसा कोर्ट मतलब सही समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सही है वो उसी को, तो ये तो अपने हमने बता दिया ना अपन के कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे मुल्क के हर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट की हिफाजत करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रेवती जुड़ चुकी हैं। रेवती, तो हमने अभी एक प्रतिक्रिया तो देखी, कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरह से ये मुस्लिम समाज में इसको लिया जा रहा है, क्योंकि 6 लड़कियों के हिजाब पहनने से ये विवाद शुरू हुआ था। अब कर्नाटका हाई कोर्ट का ये फैसला है। The Karnataka High Court has gone on to say that these writ petitions are devoid of merit and all of them have been dismissed. Or none of the petitioners' prayers have been entertained here. First, the part where the petitioners claim that it is an essential religious practice, the court has said it is not an essential religious practice in Islamic faith for Muslim women to wear hijab. So, which means that these students cannot enter classrooms wearing a hijab, claiming that it is an essential religious practice. Secondly, the petitioners had challenged the government order of February 5th, which said that students must adhere to the uniforms prescribed by the College Development Committee, and that none of the religious symbols or hijab or saffron shawls, any of these, any dress that violates a public order or is a threat to public order must not be allowed. That order was also challenged by the petitioners, but the court has said that there is no merit in that as well, and that this order stands valid. Thirdly, the fact that the interim order which said these religious symbols or saffron shawls or hijab for that matter, that will also essentially stay, because there is no provision that has been given by the High Court right now to say that these students can enter. So the status quo is pretty much will be maintained. The government's petition, the government's argument, in fact, the government's stand, in fact, is what has been validated by the Karnataka High Court, where it said that the hijab is not an essential religious practice. So, of course, now what needs to be seen is whether the petitioners will take this forward, whether they will approach the Supreme Court against the High Court order that says that hijab is not an essential part of essential religious practice under Islamic faith. Yes, definitely, Revati, will keep an eye on what next the petitioners take on, what is their stand on it. But I want to know the impact of this decision, what has come today. Well, ever since that interim order had come where the students were barred from entering classes wearing a hijab, several students have stayed out of classrooms. They have not been allowed to enter or take exams because they refused to remove the hijab before entering classrooms. And several students have missed classes as well as exams because they wanted to enter classrooms wearing a hijab. That seems to be the status as far as these students are concerned. They will continue that protest is what we're given to understand. And they would probably take this forward as well, take the legal fight forward as well, taking this to the apex court at this point of time. On the ground, anticipating that things could go wrong, there could be something on the ground as far as protests or celebrations are concerned. Immediately after the decision to pronounce judgment today came, Section 144 was imposed in Bengaluru city. No gathering, celebrations, protests allowed. In other parts of Karnataka as well, like Davangere, Hassan, Shimoga, and especially Udupi, which is the center of this controversy, Section 144 is in place. Some places it is for 1 week, some places it is for 3 days, some places it is still March 21st, like in the case of Bengaluru. Schools and colleges, educational institutions in these places have also been shut. Today has been declared a holiday for these places as well, to ensure that law and order situation does not go out of hand. So that would be the biggest challenge before the state government at this point of time, to see that the law and order situation is maintained in the coming days as a result of this particular judgment. On the ground, no untoward incidents takes place. यस डेफिनेटली रेवती, हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से जो है कानून व्यवस्था को लेकर चीज़ें कर्नाटका में हुई हैं, हिजाब विवाद को लेकर। तो रेवती, अभी मैं और आपसे जानना चाहूँगी कि अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कहाँ कहाँ पर कानून को लेकर मसले खड़े हो सकते हैं और कहाँ पर सरकार नए फैसले ले सकती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए?
Mainly it is in Udupi, which is the center of this controversy, where this all began from that Udupi college, and secondly also Shimoga, another part which saw several protests as well as students turning up in saffron shawls protesting against those students who are wearing a hijab. So Udupi and Shimoga primarily are the areas that would be of concern for the government, where Section 144 is imposed. But as a precautionary measure, prohibitory orders are also in place in places like Kodagu, Davangere, Hassan districts as well. Now the protests and all the gatherings have been primarily around educational institutions, especially pre-university colleges, which is why schools and colleges have been given a day off today. It has been declared a holiday to ensure that nothing untoward takes place in educational institutions. So schools and colleges will remain shut today, but going forward in the coming days, the decision will be taken based on the situation that looks like on the ground today. What is going to be the consequence of this order on the ground, whether there are students who would take out protests, whether there are people who would gather to celebrate this order or anything of that sort, is at this point of time prohibited. But there is police bandobast at different places across the state, especially in sensitive areas where the government thinks things could go out of hand. So maintaining law and order situation is the priority for the government at this point of time, which is why there are prohibitory orders and preparations as well on the ground. Security is beefed up in certain sensitive areas. But going forward in the coming days, we'll see how that pans out, because the last time, in spite of an interim order too, there were students who had come out and protested. There were instances where schools had to be shut for several days in a row to ensure that things don't go out of hand. So we'll have to see towards the end of the day. We'll have a sense of what this order means on the ground, and in terms of the legal aspect, whether the petitioners will continue the legal fight and take it to the apex court. So definitely, Revati, as Karnataka High Court has ruled that students now cannot object on uniform or dress code. So that means when they go to schools or colleges, then they have to follow their rules, their dress code, that has to be followed now. And very clearly, and more importantly, the Karnataka High Court has pointed out that prescribing a uniform is a reasonable restriction on fundamental right. Now, the petitioners did claim that wearing a hijab is their fundamental right, even if it just means wearing a scarf, the same color of the uniform, that should be allowed. But the High Court has not entertained that petition, saying that while you have your fundamental rights, it is also subject to reasonable restriction, and prescribing of uniform is a reasonable restriction as far as the High Court order goes. Now, the College Development Committee in each of these colleges will have the authority to prescribe those uniforms. So whatever those uniform would be that is prescribed by the CDC will have to be followed by the students. Now, there is no room at this point of time to go ahead and object to that or protest against it, saying that it violates our fundamental right. The court has been very clear on that, saying it is a reasonable restriction and students cannot object to it. Thirdly, the February 5th order of the government, which says that the College Development Committee has the authority for prescribing uniforms, and that needs to be adhered to. That is also held up by the Karnataka High Court, saying that students will have to follow it. There is no merit in questioning the government order. It is valid, and that cannot be termed invalid at this point of time. So, one, the hijab is not an essential religious practice. Two, uniform prescribed must be followed. It is a reasonable restriction on fundamental rights and students cannot object to it. And thirdly, the February 5th government order, which gives rise to the CDC or the College Development Committee, that stands and cannot be called invalid. The students must, in the end, it is a status quo will be maintained is what it essentially means on the ground. Yes, definitely, Devti, very important word today on hijab. Rao, stay with us. With me, joined online. 1,000 ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನೇನು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣಿಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರದ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಬರಬಾರ್ದು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ತರದೊಂದು ಆದೇಶ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯನಾ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೋ?
ಅದನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹಾಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದು ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತು ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಏನೋ ಬಿಂಬಿಸುವಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಹೊರತು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೂ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ನೀವು ಹೂ ಮುಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು, ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, 3 ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವಾಗೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋದು. There has been no other issue other than wearing a hijab, the controversy around wearing a hijab, which the Karnataka High Court has in simple words in 3 points clarified. So as far as wearing a hijab is concerned, there need not be any further confusions. It is very clear that the students cannot, it is not an essential religious practice is what the Karnataka High Court has said, and thereby all confusions regarding that must be cleared, and the students must adhere to the prescribed uniform in that particular school or college. So Revati is giving us important information. और एक बड़ा फैसला आज जो आया है कर्नाटक हिजाब विवाद में कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि अब हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है. ये हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. इस पर हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे और देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए. इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार फॉलो